हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज efficiency and peak inverse voltage in case of full wave rectifier. So we know that the formula for efficiency is output DC power by input AC power into 100. अब हमें पता है that power is equal to I square R होता है, so we are just going to substitute that part. So we will have a formula as I DC square R by I RMS square R into 100. Now in the previous videos we have covered that IDC is equal to 2IM by pi and IRMS is equal to IM by root 2. अब यही वैल्यूज हम लोग हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल हैव आवर एफिशिएंसी एज 81.13% इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड यही एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.56% थी एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑलमोस्ट डबल नाउ. Now let us talk about peak inverse voltage. So it is the maximum voltage which a diode can attain in reverse bias condition before entering the breakdown region. तो ये हमारे पास हमारा डायग्राम है फॉर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड इस केस में हम जानते हैं दैट these two diodes are going to be reverse biased and these two diodes are going to be forward biased. तो हमने यहाँ पे as such उन्हें उनके equivalent circuit से replace कर दिया है. So these are going to be open circuit and these are going to be closed circuit. एंड इन वोल्टेज को हमने एज सच पीक इनवर्स वोल्टेज मान लिया. अब एज सच हम लोग यहाँ इस पाथ में हमारा केवीएल अप्लाई करेंगे. सो वी विल हैव आवर इक्वेशन एज प्लस वीएम माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0. सो फॉर दिस वी विल हैव वी आउटपुट इज इक्वल टू वीएम. अब इसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर लूप में केवीएल लगाएंगे. सो वी विल हैव माइनस वी नॉट प्लस द पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0. सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज गोइंग टू बी वी नॉट एंड वी नो दैट वी नॉट इज इक्वल टू वीएम. So we will have peak inverse voltage is equal to Vm and एक बहुत ही important condition है which we have to remember that is peak inverse voltage is always going to be greater than equal to Vm. अब यही चीज अगर हम लोग बात करें in case of a center tapped full wave rectifier तो उस केस में हमारा ये वाला जो डायोड होगा that is going to be reverse biased and ये वाला डायोड is going to be forward biased. We are going to replace them with their equivalent circuits. तो ये हमारा हो जाएगा open circuit and ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा closed circuit. तो सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे. सो वी विल हैव आवर इक्वेशन एज Vm माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम दिस वी विल हैव वी नॉट इज इक्वल टू Vm. इसके बाद हम लोग एज सच ऊपर वाले लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे. वी विल हैव प्लस वी नॉट माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज प्लस Vm इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Vm इन केस ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर. एंड यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगी दैट peak inverse voltage is always going to be greater than or equal to 2 times Vm. So that was all for this video and I will see you in the next one.